सो फ्रेंड्स, अब आपकी प्यारी प्रेरणा शुरू करने वाली है वाइन टेस्टिंग। पहली बार। अच्छा स्पेशल। रशिया का क्या? हम आए हैं वाइन टेस्टिंग करने। टच नहीं करना तो बस खाना है। भाई देखते चलो, ये है हमारा वाइन यार्ड, बेसिकली विनयार्ड बोलते हैं, बराबर से वाइन यार्ड, हु केयर्स। भाई यहाँ पे पूरी एक एक उसमें नंबर नहीं, नाम लिखे हुए हैं, जिससे पता लग रहा है कि आई थिंक ये उस तरह की वाइन का नाम भी होता होगा। यहाँ पे तो लगे ही नहीं है। हाय वाह, ये देखो, सब छोड़ो यार, सुसु जाना है, भागना पड़ेगा। Wait for me, I've got little legs. भाई एक होता है, एक ठंड लग रही होती है बंदे को, है ना, और ठंड होती भी है, और दूसरा उस ठंड में आपको जाना होता है वॉशरूम, तो वो वाला हाल है मेरा। मुझे जाना पड़ रहा है, समझ रहे हो तुम। यहाँ पे बंदे तो नहीं, मतलब बंदे तो इतने सुंदर नहीं है, बट लड़कियाँ बहुत सुंदर है। लड़के लोग देख सकते हैं आपको, अभी दिखेंगी तुमको, पीछे से देख सकते हो तुम उनको, जैसे कि दिख रही हैं, सही में बहुत सुंदर है ये लोग। जैसे इस्तांबुल में लड़के बहुत सुंदर होते हैं, यहाँ पे लड़कियाँ मुझे ज़्यादा सुंदर लगी, मतलब। कोई नहीं, लेकिन जाना क्रैनबेरी जूस। But now, first we'll speak about tour. Do you want tour on this factory? Okay. He's asking if you want the tour or not. Yeah. You want the tour? तो Okay. देख लेंगे क्या है, क्या कर रहे हैं। Because I explained you about this place. ये जब वाइन यार्ड आए हैं तो मैं सोचूं एक बार मैं भी पहली बार आरंभ कर ही दूं। पीऊंगी नहीं, बट एक बार टेस्ट तो कर सकते हैं, ट्राई के कैसी होती है। जॉर्जिया आए हैं और वाइन यार्ड आए हैं तो ट्राई तो बनती है। इसको देखो, छोटी को। Okay. First, I want to show you this. Now, for crushing grape, we use presses. Yes, but in past, our grandfathers used these for crushing grape. They put grape here and crush it by feet. We can try that. Several big person. Yes, sometimes we have a master class, but during harvest. Yes. And people can have this master class. We pick out the grape. We use our tools. They help us to produce wine. And then crush the grape and juice go this way and let go this. तुमने देखा है ना, वो कई मूवीज में लोग पैरों से दबा रहे होते हैं, इसको वो वही बता रहे कैसे Go वाइन to बनती है। this is clay pot. Do you see yes, clay pot? And it's one of the main idea of producing wine according to Georgian style. This clay, first of all, it's clay, it's special clay, and they are always buried into the ground. Because the level of temperature underground on one level, 13 degree, and all processes, fermentation, filtration, and so on, take place on low temperature. It's one of the main idea of producing wine according to Georgian style. Second one, we use not only juice, but skin, seeds, stems, everything. When we produce wine, we use we call it kvever, clay pot, kvever, the same. And we use skin, seeds, and so on, because it's changed the taste of wine, smell, and everything. And I suppose you will compare, during tasting, you can compare European style of producing wine, when we use only juice, and Georgian style. Most popular Georgian folk song, and you see now it's one voice. When will be several voices, you will see the polyphony.
These voices will, each of voices go this own way, but sometimes they meet, and in this moment you have a miracle. Now, it's good with wine. This we have in wine when we taste it. Georgia collection of grape, of tapes of grape. There are more than 2,000 tapes of grape. We can go here. You can take a photo here. And there are types. There are 524 Georgian tapes of grape. And others from all the world. You can see here from United States, from Georgia, from Greece, from Italy, and so on. It's from different countries. Yes. अलग-अलग countries के भी हैं यहाँ पे grapes और वैसी wine बनती है यहाँ पे. Our company not only earn money, we have this collection for school, for student, for investigation. For example, you see here unknown the right. Unknown because it's not time to be green. It's some I don't know what is this, and we buy it, plant here, and then investigate. We cooperate with institutes, wine institute, Georgian, and because studying of researching could last 5-10 years when they found out what is this exactly. Okay. But if this will be new, we make some new name like New Star. Okay, let's. 500 से भी ज़्यादा अलग-अलग टाइप के ग्रेप्स हैं और उस तरह की वाइन बनती है. कोई ग्रीस से है, कोई जॉर्जिया की है, कोई स्पेन, इटली, हर जगह के हैं और वैसी ग्रेप्स की वाइन बनाते हैं. और उससे पहले उसने बताया कि वाइन कैसे बनाते हैं. जो आपने देखा कि कुछ लोग आपने देखा पैरों से वो दबा रहे होते हैं. Roses, yes. उसकी वाइन बनाते हैं ऐसे. Because roses feel, if we speak about some disease, roses first problem has our grape, and then we start to healing this to treat yeah. का कोई भी जैसे अगर कुछ ख़राब ना हो जाए इनके ग्रेप्स तो उन्होंने रोज़ लगाए क्योंकि सबसे पहले कुछ भी होता है तो रोज़ को ज़्यादा अफेक्ट करता है तो उससे इनको पता चल जाता है और फिर वो ठीक कर देते हैं. Real wine, 100 years old grape. It's one of the oldest in Georgia. Not this man, this. I'm younger. All right. Okay, and last harvest was from this grape. It's a monument about this, yes. Okay. And last harvest was in 2016, and we produced 67 bottles of wine only. And this very expensive wine. It's near 8,000 lari for bottle. It's wine genesis. And you see this barrel enter. Yes. We produce, this company produce unique wine, which we produce this wine from 300 tapes of grape. We call it Zigu. And we age. And you can taste it. It's close to port wine. Do you know port wine? Yes. It's sweet. Okay, let's go now. I'll show you our. जो इसने पेड़ दिखाया था वो कहता है कि 300 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है वो जिसके ऊपर जो ग्रेप्स आते हैं उसकी जो वाइन बनाते हैं वो काफ़ी महंगी होती है. 8,000 लारी की है तो बस कैलकुलेट कर लेना भाई कितनी महंगी है. ठीक है. और वो कह रहा है कि टेस्ट कर सकते हैं और वो पोर्ट वाइन की तरह होती है. मेरे को नहीं पता किस किस तरह की वाइन्स होती है क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं की बट वो बोल रहे हैं कि थोड़ी मीठी होती है. उसका ये मतलब है. आज पहली बार वाइन ट्राई करेंगे. Yes, the same. We used to like these, and we have here the connection with our culture because they word bread in Georgian, in I don't know Hindi or Sanskrit. Anyway, puri. Puri, yeah. Yes. It's Georgian. It's I suppose we sometime many years later we were one family. Okay, puri. मैंने देखा जिसके अंदर हम नान वान बनाते हैं तो वो बता रहा था कि बेसिकली उसको पूरी बोलते हैं जो कि कह रहा है कि थोड़ा टाइम पहले हम कनेक्टेड थे इसलिए वो नाम बेसिकली सेम सा है. पता है उसको ये बात.
we use it on our labels. It's a griffin. It's a natural. It's a this is. There are some legends that it was first creature who brought the grape to people. And after our. बोल रहा है कि इसके ऊपर अगर आप हाथ लगा के कोई भी विश मांगे पूरी होगी, बट एक वो है कि हाथ में वाइन का ग्लास होना चाहिए, तो करते ध्यान से नीचे। These are wines, old wines. And you see, this is the one of Georgia private museum. On this side, all things it's a real, original, and one of them more than 2,000 years old. And for this, I want to show you the difference between color of clay. Yes, it's a black. It's a original, yes, color. And the same. And if we speak about, do you know Georgia is motherland of winemaking? Yes. 10 years ago, they found some pieces of quarry, pieces of clay pot, and some traces of wine. They investigated, researched, and found out that this wine is more than, not more, 8,000 years old. It was here, it was not Georgia, it was place, yes. But it was here, and then wine goes like this. Now it's now Mesopotamia, do you know, in past, now it's Iran, Iraq, Turkey. Now it's in past it was wine region, and the most popular wine was from this zone. It was religion, wine love religion. And now they are Muslims. They don't don't drink the wine, but when they come here, they taste, because tasting it's not drinking. Okay, and all time and in Turkey, this is coffee. This and this coffee, because it's very the original very expensive, and to Tbilisi National Museum to Tbilisi. It's a copy, but it we found in our fields. And you see on this on the top of this some ceremony with the people with the animal mask. It says that they use, often they use it in Egypt. Yes, they use, because they have many gods with body of the man, but head of some animal, and they use this ceremony. But we found it here, and it's some connection was Saint Nino. Her name Nino, and she made first symbol of Christianity, first cross from grapes, from the branches of grape. That's why sometimes you can see the Georgian cross like this and like this. Yes, First of all, yeah, in the church we saw. in culture. बोल रहा है For example, do you सेंट know the लेनॉन जो second थी name of औरत, Georgia? Second उसने name of सबसे पहले Georgia, क्रिश्चियन का it's साइन बनाया था, one वो भी name, ग्रेप्स a की second sacrifice. स्टेम से। Georgians call themselves this country Sakartvelo. If we cut Sakartvelo, it's a people who lives here. This is silver rings around the branch, and they use it for healing, for treat. Yes, for treat. And he has a knife. And do so in Tbilisi, big monument, Mother Georgia. Yes. It's the same idea. She holds the wine for friends and sword for enemies. The same idea, yes? This is my best. This is 3,300 years old. It's original. It's original. It's original. It's one of the oldest quarry. And you see this egg shape, yes? It's impossible to put on the floor. It's only for bearing into the ground. Yes? The capacity of this 140, and you see some beauty here, some signature of artists. Yes? And they ask why, because it will be invisible. Invisible is will be underground. But our scientists asked us that some master produced it for selling. He wanted to sell it. That's why he made some beauty. Very Yes. big. 1% 2 tons. 2 tons. Capacity of this 2 tons. And we use them for producing wine according to Georgian style. Yes? ये लोग इसमें वाइन बनाते हैं, देख रहे हो तो। And we use
bark of wild cherry. Bark of वो इतना बड़ा है कि पता नहीं कितने wild बंदे cherry फिट हो is जाएं a good इसके अंदर। antiseptic. And we do sometimes the process of cleaning could last 1 month. Because after washing, we pour water, then research this water. If we got some problem, we repeat it. Clay pots, but not only juice, but skin, seams, stems, everything. Yes. Georgian oak is not good. Change the. ये अंदर यहाँ पे जो इन्होंने नीचे बैरल्स और ये सब रखे हैं, Okay, यहाँ and पे the last बियर्स room. रखते You हैं। can take photo near this big barrel. It's possible. बहुत अलग है। 2001. Yes, and from this period, from each harvest, we have here, they keep here the wine. Yes, it's our collection of our wine. We don't sell it, it's our history. Guys, best part of the tour is tasting now. We're gonna taste wine. Wine tasting. This is yours. अच्छी दिख रही है सबकी, क्योंकि अभी सब वाइन टेस्ट करने वाले हैं। हम दोनों फर्स्ट टाइम। तुम भी कर रही हो ना? हाँ। यो। And now I ask, because it is not. This place is reserved. You can. And I'll bring the wine card. मैं बोल रही हूँ ना, हाई ऑन लाइफ हूँ मैं, पहले से पीने से पहले ही ऐसी उसले नहीं पीती होती मैं। लाइटों में फोटो भी अच्छी है। इधर बैठते हैं तो भी हम खाना चाहिए। सबने पहनी है ये। अच्छा फोटो खिंचाएं। कौन देख रहे हो कितनी है? यहाँ भी कंबल लपेटे हुए हैं। How big? छोटी. ये उस बंदे से पूछिए हाउ बिग इज छोटी। Also the spinach stuffed khachapuri. इस वाइन ट्राई कर लो। वाह, ये वाइन है। कितनी प्यारी बोतलें हैं यार। मुझे लग नहीं रहा इससे ज़्यादा पीपा हूँ उनका साथ। हेलो। वो कह रहा है मैं करूँगा मैं। अगर कॉक अंदर चला गया ना, देख लेना तुम। तो फिर इससे वाइन बनवाएंगे। हाँ। फिर वो बंदे ने पूरा ध्यान रख लिया, देख रहे हो आप? ताकत है बंदी में। है ऐसे थोड़ी ब्रेकफास्ट खाया हुआ है, अभी भी चलेगा। ताकत नहीं है, वो जुनून है पीने का। जुनून काम करवा रही है। हमारे पास इसके पास मैंने शायद उसको बोल दिया था 2 छोटी दे दो, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। छोटी। मुझे याद नहीं आ रहा। दो, हाँ दो। सो फ्रेंड्स, अब आपकी प्यारी प्रेरणा शुरू करने वाली है वाइन टेस्टिंग। पहली बार। अच्छा, स्पेशल। और ये पार्ट वीडियो से कट मत करिएगा, मेरी इतनी प्यारी वॉइस वो डाली है मैंने। पक्का डालेंगे। खाचapuri। क्या हुआ? कोड़ी है यार ये तो। खाचapuri भी फिर भी स्वीट है। अरे ये तो इसका वाला है, चिकन है ये। तो ये क्या है? ये कौन? ये भी चिकन है? तबाका। और दो चिकन आया हूँ। ये तबाका है, ये तबाका ये है। तबाका है। अच्छा, ये बेवकूफ लग रहा है। इसका वीडियो बना लो। इनको लग रहा है ये बड़े कूल है। ये सही था। ये सही है। गाइस, उन्होंने बोला था कि वाइन हाथ में रख के और उनको टच करके एक विश मांगनी है। ठीक है, वाइन तो ख़त्म हो गई है, हल्की सी पड़ी है शायद ये। हाँ, एक घूंट पड़ा है और मैंने पी भी नहीं है, तो मैं इनको टच करके ज़रा विश मांग लूँ। देखते हैं पूरी होती है नहीं होती है। तो मुंह देख रही हमारी बंदी एक लड़के के पीछे पागल हो गई है। सही वाइरल बट उसको इंग्लिश नहीं आती होती, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। हम अंदर इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे हीटर है। आते जाते दिख गया होगा तो। नहीं, मैंने बनाई है वीडियो, जिसने हमको सर्व किया था, ये उसी बंदे की बात कर दी है। यही है सारा।